Okay, Assalamu alaikum. So this lecture is in continuation to what we were studying in product and portfolio analysis. Remember we talked about year-on-year growth as well as compounding growth, and one byproduct or one upshot of growth in terms of product development is that when you basically introduce new products, when you launch new brands into the market, there's a good possibility that your new product, if its needs and wants are similar to those of the older products, so that new product is basically going to eat away some of the sales of the older products, and that phenomenon is basically called cannibalization rate. So जब कभी भी आप लोग ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ को देखेंगे, इसमें स्पेसिफिकली जो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, जब कभी भी आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो उसमें एक बात याद रखें कि कैनिबलाइजेशन टू अ डिग्री इज़ इनएविटेबल. अगर आपका जो नया प्रोडक्ट है जो आप लॉन्च कर रहे हैं, अगर वो एक्सेसिबल है आपके ओल्ड कस्टमर्स जो कि पुराने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसको अगर एक्सेस कर सकते हैं, नए को भी पुराने को भी, सो याद रखें कि जो कैनिबलाइजेशन है कुछ हद तक वो बेसिकली इनएविटेबल है. आप उसको 0% पर ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते. ठीक है. सो वील सी कि ये हम कैनिबलाइजेशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेटर इन द लेक्चर और मे बी इन द पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर बेसिकली वील टॉक अबाउट that what is the maximum amount of cannibalization that a firm can basically bear before it starts making losses. ठीक है. So let's talk about it. Okay ji, so cannibalization is a familiar business dynamic, and companies with successful products that has strong market share is faced by two conflicting ideas. The first is that it wants to maximize profits on its existing product line. So एक आपका गोल ये है that you have to maximize your profits. ठीक है. And while concentrating on the current strengths that promise success in the short term. Second idea या second आपका गोल ये है that the company or its competitors may identify opportunities for new products that better fit the needs of certain segments. So if the company introduces a new product in this field, however, it may cannibalize the sales of its existing products. So आपके दो basically objectives ये हैं कि एक तो आपने अपने profits को maximize करना है, ठीक है ना, आपने maximum efficiency को gain करना है. लेकिन दूसरा आपका एक और गोल ये भी है कि आपने मार्केट में अपने कंपेटिटर्स को डिस्करेज करना है. अगर कोई भी नई अपॉर्चुनिटी मार्केट में अराइज होती है और आप इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि जी इफ़ यू गो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट, इफ़ यू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, that introduction is going to basically affect your optimum profitability. So that's another goal. और अगर आप इस चीज़ की वजह से अगर आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करते, सो याद रखें कि यू आर लीविंग एन अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर योर कंपेटिटर्स, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हवाले से, लॉन्ग टर्म मार्केट कंपेटिटिवनेस के हवाले से इट्स नॉट गुड. सो दैट्स वाई कैनिबलाइजेशन जो है वो जब कभी भी आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आपके जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े बहुत इफेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ द कैनिबलाइजेशन इफेक्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स. ओके, सो हाउ डू यू बेसिकली डिफाइन कैनिबलाइजेशन एंड हाउ डू यू बेसिकली कैलकुलेट इट? सो cannibalization is the market phenomenon in which the sales of one product are achieved at the expense of some of the firm's other products. Okay, so assume करें you're selling product A, ठीक है, now, and let's say आपने basically एक नया product, एक new product launch किया है, that's product B, ठीक है, और product B की total sales जो हैं, let's say total सेल्स जो हैं लेट्स से वो 50 यूनिट्स हैं, ठीक है. प्रोडक्ट ए की टोटल सेल्स जो हैं वो लेट्स से वो भी 50 यूनिट्स हैं, ठीक है. सो जब ये न्यू प्रोडक्ट बी लॉन्च हुआ था, सो प्रोडक्ट बी की जो सेल्स 50 यूनिट्स थी, याद रखें ये सारी की सारी जो 50 सेल्स थी ये सारी न्यू सेल्स नहीं थी, ठीक है. न्यू सेल्स का मतलब ये है कि ये न्यू कस्टमर्स नहीं थे या फिर ये आपके कंपेटिटर्स के कस्टमर्स नहीं थे. इट्स प्रीटी इंट्यूटिव टू सी कि कुछ कस्टमर्स बेसिकली यहाँ से जंप करके प्रोडक्ट बी की तरफ चले गए होंगे. सो मे बी बिफोर द लॉन्च जो टोटल सेल्स थी दे वर 60,
बट आफ्टर द लॉन्च दे रिड्यूस टू फॉर प्रोडक्ट ए दे रिड्यूस टू 50, विच मीन्स कि यहाँ से 10 यूनिट्स हैं वो प्रॉबली या 10 कस्टमर्स जो है प्रॉबली वो जंप करके प्रोडक्ट बी की तरफ चले गए हैं. सो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ कैनिबलाइजेशन, दैट व्हेन यू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, आपके जो पुराना प्रोडक्ट है उससे कुछ सेल्स जो है वो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाती है. अगेन गिवन के अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स सिमिलर या मिलती जुलती नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. वी लुक एट अ कपल ऑफ एग्जांपल इन अ मिनट. So the cannibalization rate is the percentage of sales of new products that come from a specific set of existing products. So under this cannibalization rate, if you want to calculate that, you have to basically put the sales lost from existing products. तो जैसे हमने कहा कि जी आपकी sales पहले थी 60, now they are 50. So what is the loss of sales? That is 60 minus 50. That's equal to 10. So this is the figure जो कि basically you have to put in the numerator. What's in the denominator? It's pretty simple. Sales of new product. So what are the sales of new product? That's 50. So what you'll get is 10 divided by 50. Now think about it. What are you doing? आप ये देख रहे हैं कि आपका जो नए प्रोडक्ट की सेल्स हैं उनमें से कितने % सेल्स जो हैं वो बेसिकली पुराने प्रोडक्ट से आई हैं. So याद रखें, these are the sales lost by the old product to the new product, and these are the total sales of the new product. ठीक है, you multiply that by 100, and in this case अगर यही calculation हो, you'll get a cannibalization rate of 20%. इसका मतलब क्या है? Once again, how do you interpret this 20%? 20% का मतलब ये है कि ये जो 50 यूनिट्स की टोटल सेल्स हुई हैं, याद रखें 50 क्या है? सेल्स ऑफ B. इन 60 इस 50 यूनिट्स में से जो 20% सेल्स हैं वो प्रोडक्ट ए से आई हुई हैं. दिस इज व्हाट कैनिबलाइजेशन रेट इज. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, इट वुड बी अ वेरी वैलिड क्वेश्चन इफ यू थिंकिंग अबाउट इट, दैट हमने बड़ी आसानी से कह दिया कि अगर मैं यहां पर दोबारा से ड्रॉ करूं, लेट मी चेंज द कलर, ओके, कि बेसिकली जो प्रोडक्ट ए था, जो प्रोडक्ट ए था, हमने बड़ी आसानी से कह दिया कि जी प्रोडक्ट ए की जो प्री लॉन्च, लेट्स कॉल इट प्री लॉन्च सेल्स थी वो थी 60, एंड पोस्ट लॉन्च सेल्स हो गई, याद रखिए प्री लॉन्च पोस्ट लॉन्च जो है ये प्रोडक्ट बी की बात हो रही है. प्रोडक्ट बी से पहले की सेल्स 60 यूनिट्स, let's write units. प्रोडक्ट बी के लॉन्च के बाद की सेल्स 50 यूनिट्स. ठीक है, एंड वी आर समहाउ वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो 10 सेल्स हैं, ये जो 10 यूनिट्स हैं, ये बेसिकली सीधे सीधे यहीं पे चले गए होंगे प्रोडक्ट बी के पास, विच इज नॉट द केस. ठीक है, अंडर द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिमेंबर, ऑर्गेनाइजेशंस समटाइम्स लूज कस्टमर्स. ठीक है, विच इज नोन एज द चर्न रेट. ठीक है, विच इज नोन एज, याद रखें, द चर्न रेट. सो द चर्न रेट इज द अमाउंट ऑफ पीपल और द परसेंटेज ऑफ पीपल दैट यू डोंट रिटेन, जिनको आप रिटेन नहीं करते. ठीक है, जैसे कि अगर ये 60 लोग जो हैं इन्होंने अगर आपसे जनवरी में परचेज किया और अगर आपसे 50 लोग फरवरी में परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका चर्न रेट जो है वो बेसिकली यू कैन कैलकुलेट इट, दैट इज 20 डिवाइड बाय दैट इज 10 डिवाइड बाय 6. ठीक है, इट्स 1/6. सो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, याद रखें, लोग आपको छोड़कर जाते हैं. सो हाउ वुड यू नो कि अगर आपने एक नया प्रोडक्ट बी लॉन्च किया है, इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, राइट, और उसके लॉन्च करने के बाद अगर ये 10 यूनिट्स का फर्क आया है, सो डेफिनेटली कुछ कस्टमर्स जनरेट की वजह से छोड़कर चले गए होंगे. ठीक है, कुछ कस्टमर्स ऑल टुगेदर, ना उन्होंने प्रोडक्ट ए परचेज किया होगा, ना प्रोडक्ट बी परचेज किया होगा, हो सकता है किसी कस्टमर की तरफ चले गए हों, किसी कस्टमर से उन्होंने परचेज करना शुरू कर दिया हो, ब्रांड स्विच कर दिया हो. ठीक है, और इन्हीं 10 में से कुछ लोग होंगे जो कि पॉसिबली प्रोडक्ट बी की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे. सो हाउ वुड यू नो कि कितने लोग जो थे वो चर्न रेट में से निकल गए, या मोर इम्पोर्टेंटली कितने लोग प्रोडक्ट ए की जगह प्रोडक्ट बी, आप ही की कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं. सो टू आंसर दैट, याद रखें, यू हैव टू बेसिकली डू सम एस्टिमेशंस, एंड वन वे ऑफ डूइंग दैट एस्टिमेशन इज गेन लॉस एनालिसिस.
ठीक है, गेन्स लॉस एनालिसिस आप करते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल गेन्स एंड लॉस एनालिसिस. इट्स अ वेरी सिंपल टूल. व्हाट यू डू इज, so let's read about it. This method reallocates gains and losses in volume over 2 periods, normally those immediately before and after the launch of a new product. Simply pre-launch and post-launch. The analysis is done on a household basis and volumes are adjusted to take account of any changes in volume between the pre-launch and post-launch periods. So basically what you do is कि आप launch से पहले लोगों से जाके household से जाके household आप जाते हैं और आप सवाल पूछते हैं. You take a sample and you go and you ask them कि व्हाट ब्रांड दे यूज़, ठीक है, और लॉन्च होने के बाद आप उसी सैंपल के पास दोबारा जाते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि हैव दे स्विच्ड द ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट और मिल्क और व्हाटएवर दैट इज ओवर द लास्ट 2 months. ठीक है, पिछले 2 महीनों में उन्होंने चेंज किया है कि नहीं किया, और अगर चेंज किया है तो कौन से ब्रांड की तरफ गए हैं. सो दैट्स हाउ यू वुड नो कि जो आपका जो चर्न रेट था, ये जो आपका जो बेसिकली जो लॉस जो हुआ था टू प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट ए, उसमें से कितने लोग जो हैं वो स्विच करके प्रोडक्ट बी की तरफ आ गए हैं. सो दिस इज हाउ बेसिकली यू गेट द न्यूमरेटर फॉर दिस फॉर्मूला, सेल्स लॉस फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. ओके, ये एक एग्जाम्पल है. सो ए लिक्विड जो है, दिस वॉज अ न्यू ब्रांड इंट्रोड्यूस्ड बाय एरियल इन यूके इन 1986. And it was a line extension of the parent powder brand. So basically याद रखें कि एरियल जो था वो डायरेक्टली उन्होंने लिक्विड लॉन्च नहीं किया था, उससे पहले एरियल पाउडर अवेलेबल था. 1986 में फिर एरियल लिक्विड लॉन्च हुआ in UK. It rapidly gained share. The gain loss methodology gives a matrix of brands gaining share against brands losing share. Excuse me. An abbreviated version of this is shown in table 1. So this is, याद रखें, this is table 1, illustrating the source of aerial liquid's share gain. So try to understand what this table is about. So Ariel powder, Persil, Whisk, Bold, Daz, Store and other brands. ठीक है, ये सारे के सारे पुराने established brands हैं जो कि पाउडर या कुछ भी बेचते होंगे. These are detergents. And this is the new product. ठीक है, Ariel liquid. और ये लॉन्च हुआ और उसके लॉन्च होने के बाद they made a sales of 101 maybe million, thousands, whatever. ठीक है, सो ये 101 की सेल्स हुई और ये गेन्स लॉस जो मेथडोलॉजी थी उससे बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स आया, एक ये टेबल आया, और ये टेबल में बताता है कि ये 101 का जो ब्रेकअप है ये कहाँ से बेसिकली सेल्स आई हैं. सो आउट ऑफ दिस 101, 32 यूनिट्स की जो सेल्स है वो बेसिकली इनके पेरेंट ब्रांड जो है दैट इज एरियल पावर, ये वहाँ से बेसिकली आई है. 16 और ये बाकी याद रखिए जो है पर्सिल, विस्क, बोल्ड, डैज, स्टोर्स एंड अदर्स, ये कंपेटिटर्स हैं. these are Ariel's competitors. So 16 units from Persil, 25 from Whisk, 8 from Bold and so on and so forth. But the important thing in terms of cannibalization is दो चीज़ें. एक तो the calculation for cannibalization कि जी 32 यूनिट्स जो हैं वो बेसिकली एरियल पावर में से कट कर यहाँ पर आ गए. ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट देखें, इफ़ यू नोटिस, सबसे ज़्यादा जो बेसिकली जो कट लगा है वो एरियल पाउडर को ही लगा है, अपने पेरेंट ब्रांड को ही लगा है. ठीक है, तो इसको आप डिफरेंट तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. बाज़ लोग कहेंगे कि जी ये तो ज़्यादा नुकसान हो गया है, सबसे ज़्यादा हमारे अपने ब्रांड से ही लोग जो हैं वो मूव करके एरियल लिक्विड की तरफ आ रहे हैं. उसमें आपने उसको आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे एवेलुएट करना ठीक नहीं होगा. फॉर दैट यू नीड टू बेसिकली लुक एट द पाई कि एरियल पाउडर जो है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स उसका क्या मार्केट शेयर है. लेट्स से अगर आप दो एक्सट्रीम एग्जांपल्स देख लें. लेट्स से अगर एरियल पाउडर जो है उसकी सेल्स 75% ऑफ द मार्केट है, 75% ऑफ द मार्केट है. ठीक है, सो डेफिनेटली अगर इतनी ज़्यादा मार्केट शेयर अगर एरियल पाउडर के पास है तो फिर ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो डेफिनेटली एरियल पाउडर से ही शिफ्ट करेंगे एक नए ब्रांड की तरफ. ठीक है, सो दैट वोंट मीन कि जी दिस इज़ अ बैड सिचुएशन. लेकिन अगर लेट्स एक और एक्सट्रीम एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ 5% अगर एरियल पाउडर के पास है, ठीक है, और उसमें से अगर 32 यूनिट्स यहाँ पर शिफ्ट कर गए हैं जबकि बाकी जो हैं वो इतने थोड़े गए हैं, एटलीस्ट एरियल पाउडर से देखें ना, जो सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट है दैट इज़ 50% ऑफ एरियल पाउडर. ठीक है, जो लॉस हुआ है दैट इज़ 50%. 32 को अगर आप हाफ करें तो 16 बनता है. सो ये एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है. खैर ये इंटरप्रिटेशन जैसी भी है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, या जो एक
बेसिक चीज़ समझने की है कि दिस इज़ प्रीटी यूजुअल। अगर आप ही का एक ब्रांड जो है वो दूसरा एक डिफरेंट ब्रांड या एक डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करता है, दिस इज लिक्विड, दैट वाज पाउडर, सो यू शुड एक्सपेक्ट कि ज़्यादा जो बेसिकली जो शिफ्ट होगा वो आपके ब्रांड से ही होगा। उसकी बड़ी वजह है ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सोचें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर प्लस ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव। सो कंज्यूमर जब अगर परसिल से यहाँ पर आता है, एरियल लिक्विड की तरफ आता है, तो याद रखें कंज्यूमर ना सिर्फ प्रोडक्ट टाइप जो कि पाउडर टू लिक्विड है वो चेंज कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ द कंज्यूमर इज ऑल्सो स्विचिंग द ब्रांड। सो प्रोडक्ट नया ट्राई करना, यस दैट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ ब्रांड स्विच करना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कंज्यूमर्स के लिए। सो दैट्स वाई आपको थोड़ी सी यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आ रही है। कम लोग जो हैं वो, अच्छा माय अपॉलॉजीज, याद रखें जो सबसे जो सेकंड हाईएस्ट है दैट इज 25 नॉट 16। सो आपको थोड़ी सी ये फ्रिक्शन नजर आ रही है। कम लोग जो हैं, ये कम जो यूनिट्स हैं वो शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम अदर ब्रांड्स और फ्रॉम कंपेरेटिव ब्रांड्स टू लिक्विड, और ज़्यादा यूनिट्स शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम पाउडर फ्रॉम एरियल पेरेंट ब्रांड पाउडर टू एरियल लिक्विड। अगेन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने ब्रांड स्विच नहीं किया, सिर्फ अपने ही ब्रांड में जो उनको एक नया वेरिएंट नज़र आया है वो उन्होंने स्विच किया, जो कि कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से काम आसान है। खैर आगे जाते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखें, सो 32 यूनिट्स लॉस्ट टू द न्यू प्रोडक्ट, और न्यू प्रोडक्ट की सेल्स कितनी? दैट्स 101। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 32% बनता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 32 से मे बी थोड़ा सा कम ही बने, बट अप्रॉक्सीमेटली 32% बनता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर कैनिबलाइजेशन रेट इज कैलकुलेटेड। इट्स प्रीटी सिंपल। सो अ कंपनी हैज अ सिंगल प्रोडक्ट दैट सोल्ड 10 यूनिट्स। ओके, सो एक कंपनी है, छोटे नंबर इस्तेमाल किए फॉर सिंप्लिसिटी। सो दे सोल्ड प्रोडक्ट्स 10 यूनिट्स इन द प्रीवियस पीरियड। The company plans to introduce a new product that will sell 5 units. So they are planning to introduce a new product that will sell 5 units. So this is projected volume. याद रखें, you can refer to one of our older lectures, volume projection, and you can see that how these volumes could be projected with a cannibalization rate of 40%. So this is also, याद रखें, this is also based on intuition or experience. Thus 40% of the sales of the new product, that means 5 units का 40%, which is 2 units, come at the expense of the old product. So ये 2 units out of 5, 2 out of 5 जो है, याद रखें, ये old product में से आपको मिलेंगे. Therefore, after cannibalization, the company can expect to sell 8 units of the old product, that will be 10 minus these 2 units, and 5 of the new product, or 13 units in total. Alright, let's look at another example. So Louise sells umbrellas on a small beach where she is the only provider. Her financials for last month were as follows. Umbrella sales price was 20. Cost per umbrella was $10. Umbrella contribution unit was $10. याद रखें contribution margin जो है, that is equal to selling price minus variable cost. We covered that under break-even analysis. Total unit sales per month is 100. So how do we basically come to this conclusion? The total unit sales per month, okay, this is the unit sales, sorry. So ये तो data आपको provide किया गया है, these are 100 units, and this is what I was talking about, total monthly contributions. So आपकी monthly contributions कितनी हो जाएंगी? 1000. How do we get this? So you have to take this sales का unit and contribution. So आपकी per unit contribution is 10. And you are selling 100 units, so in total you are making $1,000 in contributions. Okay. All right. So what's new? Next month, Louise plans to introduce a bigger, lighter weight umbrella called the Big Block. So she is introducing a new product into the same market. So that's product development, market strategy. Okay. Projected financials for the Big Block are as follows. Big Block sales price. Okay, so the sales price set for the Big Block is $30. So it's pretty high. याद रखें पुराने प्रोडक्ट की जो प्राइस थी that was 20, नए प्रोडक्ट की प्राइस जो है that is 30. Variable cost per Big Block is $15. So this is the total variable cost. Big Block contribution margin, once again contribution margin is equal to selling price minus variable cost, which is 30 minus 15, which is equivalent to 15. So this is the contribution per unit for Big Block. याद रखें umbrella जो regular umbrella थी, पुरानी umbrella जो थी, उसका जो contribution per unit था that was $10. Total sales per month for Big Block is 50. ठीक है, 50 units
जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं दैट द बिग ब्लॉक वुड बी सोल्ड, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट मंथ. सो टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर बिग ब्लॉक वुड बी 50 into 15. So that would be equal to $750. All right. So ये सिचुएशन है. अब यहाँ पर फिलहाल कहीं पर भी कैनिबलाइजेशन की बात नहीं हुई. That what is the expected rate of cannibalization? So if you expect that for some reason, somehow, which I told you before is not possible, but let's say somehow if there is 0% cannibalization, याद रखें हम क्यों कह रहे हैं कि possible नहीं, because it's the same beach where she is going to sell it, ठीक है. So दोनों products जो हैं लोगों की access में हैं. They have now, the consumers have an option either to buy the regular umbrella or to buy the big block. So now if there is 0% cannibalization, so old products जो हैं OP 100 units बिकेंगे, new products NP 50 units बिकेंगे. So in total 150 यूनिट्स बिकेंगे. ओल्ड प्रोडक्ट्स से जो कंट्रीब्यूशन आएगा दैट वुड बी $1,000 एंड न्यू प्रोडक्ट्स से जो कंट्रीब्यूशन आएगा दैट वुड बी $750. सो इन टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट वुड बी $1,750. बट देयर इज सम कैनिबलाइजेशन. सो इफ देयर इज नो कैनिबलाइजेशन, आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा दैट वुड बी 1,750. But upon reflection, however, Louise thinks that the unit cannibalization rate for big block will be 60%. That's a pretty big number. 60%, meaning कि जितनी भी big block बिकेगी, ठीक है ना, उसका जो 60% होगा, let's say if this is the total sales का bar, ठीक है, let's say this bar represents the total sales for big block. So this is sales of big block. So उसमें से जो 60% है, so let's say this is the 60%. So this is coming from what? This is coming from regular umbrella. Meaning regular umbrella जो बिकती हैं उनमें से units जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे? That would be 60% of the big block sales. और ये बाकी के जो 40% है ये new sales होंगी. All right. Her projected financials after accounting for cannibalization are therefore as follows. Big block unit sales 50, cannibalization rate is 60%. So what is 60% of 50? That's 30. Meaning कि regular umbrella जो है वो जितनी भी बिकती थी, याद हो आपको, तो वो 100 बिक रही थी. So अब वो 100 minus 30 हो जाएगी, because इनमें से जो 30 हैं वो big block की तरफ चली जाएंगी. So अब सिर्फ 70 regular umbrella बिकेंगी. You can see it here. That only now you're only selling, or now she's only selling 70 regular umbrellas. New total contribution for regular would be 70 multiplied by 10. याद है कि contribution margin change नहीं हुआ. हम लोग assume कर रहे हैं कि variable cost भी change नहीं हो रही, fixed cost भी change नहीं हो रही, ठीक है. So now the total contribution for regular umbrella is 700, and the big block total contribution is the same. That's 50 multiplied by 15. That's 750. And now she is making a total of $1,450. Now one thing to notice here is that she is still making some profits, some good profits as compared to when she was only selling the regular umbrella. याद हो तो आपको, तो regular umbrella sell करके जो total contribution आ रहा था for, अगर मैं R यहाँ पर लिखूँ regular, that was $1,000. Now she's selling two different types of umbrellas and with even 60% of cannibalization, she's making a total contribution of $1,450. So her profits have definitely gone high. ठीक है ना? So that's good. So under these projections, total umbrella sales will increase from 100 to 120. याद रखें. So regular जो थी वो बिकी अब under new circumstances 70, और big block she sold 50. So a total of 120 umbrellas were sold. And total contribution will increase from 100 to 1,450. Louise will replace 30 regular sales with 30 big block sales and gain an extra $5 unit contribution on each. She will also sell 20 more umbrellas than she sold last month and gain $15 unit contribution on each. So this is pretty straightforward. In this scenario, Louise was in. This is very important. यहाँ पर you have to pay some attention.
So in this scenario, Luis is in the inevitable position of being able to cannibalize a lower margin product with a higher margin product. So अक्सर लोगों ने नोट किया होगा कि the good thing was that अगर आप यहाँ पर देखें, these are the stats for the older product, these are the stats for the new product, and unit contribution here is, or if I could change the color so that you could see it. So पुराने प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था that was 10, और नए प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है that is 15. What does that mean? If I were her, I would be ecstatic अगर मेरी रेगुलर अम्ब्रेला या मेरी मैं जब बिग ब्लॉक लॉन्च करता और मेरा जो कैनिबलाइजेशन रेट अगर वो 100% हो जाता, I would have been very happy, because मेरा हर एक यूनिट जो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ओल्डर और रेगुलर अम्ब्रेला टू बिग ब्लॉक, वो बेसिकली मुझे एक एडिशनल $5 दे रहा है. देखें ना, अगर मैं रेगुलर बेचता हूँ तो आई मेक $10, अगर मैं बिग ब्लॉक बेचता हूँ तो आई मेक $15. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ +$5. ठीक है ना, जितना अगर मैं 10 की जगह अगर मैं 15 कमा रहा हूँ, तो मुझे हर एक यूनिट पे एडिशनल $5 मिल रहे हैं. However, याद रखें कि दिस इज नॉट ऑलवेज द केस. हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके नए प्रोडक्ट की जो बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पुराने प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ज़्यादा हो. अक्सर जो नए प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कम होता है. ठीक है. सो समटाइम्स हाउएवर न्यू प्रोडक्ट्स कैरी यूनिट contributions lower than those of the existing products. In these instances, cannibalization reduces overall profits for the firm. So I hope so far you would have understood what is cannibalization rate, how it's important, how to calculate it. In our next lecture, we'll talk about what is the maximum percentage of cannibalization that we can basically, or that our business can basically handle. And after that point, we are going to basically start making losses if we exceed that cannibalization rate. Thank you.